Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Aviral. Good evening, Varun. Good evening, Sumit. Keep the chart clean, guys. We'll start in 2 minutes. Good evening, Nilesh. Hit the like button, guys. Do you guys want to learn something new today? Or you want to get perfect at what you guys are doing at the current stage? Definitely. Screening में मैं बताऊंगा. Okay. Sir, in gold short, target is Sir, in gold short, target is completed and inducement is created. Please explain me if there is a long entry. Where did you entered and why? Long trade अभी तक हमने execute नहीं किया है. Execute आप लोगों के साथ ही करेंगे. Swing trade चल रहा है long का. 'Where have you entered? 28.97, 29.10, 29.35, 29.83. These are the levels what I've executed. Okay. Me personally get perfect at what we are doing. Okay. So what are you waiting for? Which confirmation? Also, please, sir, execution वाला part में बहुत ज़्यादा doubt है. Clear हो जाएगा. Don't worry about it. So you guys don't want to learn something new. Okay, then cool. Let's start with the screening, guys. Daily time frame. What are the major things that we'll be looking at? Sorry, guys. This is our previous demand. With the previous demand, with the inducement, we had got the retracement.
This will be the inducement range what we'll be calculating with the calculations we have added at this point of action. Okay. Then what is the next step? जितना हमारा previous demand था उतना हमारा first allocation point होगी, उसके साथ movement continuity में 150% से rejection ली. Right? Post the rejection is taken, what are the next steps that you guys have to be looking here? The next step you will be looking here is allotting, sorry, the next step that you guys will be looking over here is allocating the trades in the directions of the bullish markets. How do you look into the consideration at the current stage? Step one, this will act as your movement spectrum. With the movement spectrum, जितना हमारा previous retracement point यहाँ पे supply create हुई थी, उतना ही retracement में हमको यहाँ पे demand दिखने को मिलेगा. Post that, what are the next things that we'll be looking over here? Market continuity में break की थी. With the continuity, market is taking the rejection from the same point of actions. What are the next steps that we'll be looking over here? Let's allocate the trades with the swing high, lows, and retracement point. At the current stage, this is my swing high, which is at 2930.681. My swing low is at 2833.731. And this will act as my retracement point, which is 2880.464. Right? जैसे ही हमें ये point of actions मिलता है, what are the next steps that we'll be looking at? The next steps will allocate the mathematical concept 2.0. Just give me a moment, guys. Opening the Excel. Good evening, Rachel. भाई थोड़ा थम जाओ, स्क्रीनिंग हो जाने दो, उसके बाद लिखो मैसेज. सर कल नहीं आए, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो नहीं आ पाया. Waiting for Excel to open, guys. Just give me a moment. मेरे सिस्टम में मेरे को नोटिफिकेशन आया है. Your system is just as hot as the sun. Please cool it down. Okay. So once we draw out the numbers of the swing high, low, and retracement points, what are the next steps that we'll be looking at? Subtract the swing high and swing low in this scenario 2930.681, right? With that, what is the swing low over here? 2833.731. With this, what is the formulative number that we are getting? 96.95. What is the retracement point that we are having? 2880.664. Once we get the retracement point, what is the next steps that we'll be looking at? We will be adding the numbers because the market is in the bullish state. So the retracement point is 2880.464 plus 96.95, which is a formulative number, into 1.618. The first target comes down to be at 3037.3291. Okay. Once this is done, what is the next step that we'll be working on? The next step we'll be working on is the intermediate ratio. The intermediate ratio, which will be taken under the consideration of 3074.364. Post allocating the number, what is the numbers that is being shown as?
exactly at the completion of the 200%, right? Post completion of this, what is the next steps that we'll be looking at? Coming down to 4 hours. What is 4 hours indicating to us? The 4 hours is indicating the movement in the bullish side, and आज के दिन में it is creating a major small retracement, which we can say. The previous demand, with the completion of the previous demand, multiply the version, and then in the continuity, post continuity, जितना हमें मूवमेंट मिला है उतने का ही allocation यहाँ पे दिखने को मिलेगा. Post allocation is looked at, we see a proper reversal which was taken place from this point of action, and this point of action was also a mathematical number where the market took the reversal from. So allocate the supply. This will be your supply one. Post your supply one is allotted. What is your next step that you will be looking over here? The previous candle of the supply will get converted into the demand as the retracement. सो जैसे ही हमारा रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन हुआ, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? जितना हमारा सप्लाई यहाँ पे बिल्ड आउट होता है उतना ही मूवमेंट आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन पे मिलते हुए दिखेगी, एंड विद द कंटिन्यूटी. रिजेक्शन कितना मिला हमें यहाँ पे? जितना हमारा प्रीवियस रेट उतना ही रिजेक्शन यहाँ पे आपको दिखती है. उसके साथ मार्केट कंटिन्यूज द मूवमेंट, right? Post market completion, post the market has completed the movement, what is the next steps that we'll be looking at? What is the retracement that we are having? The retracement one you can take under the consideration of this, which is equivalent to this. So this will act as your one point of action, right? जैसे ही वो complete होता है, break होता है, multiply the version and add it on. 200% से rejection लेके continue लिया था. Yeah, you can look into the structure of this entire inducement range, which will act as your demand, right? So anything can be working. If you're taking from the previous retracement, you should take it from the wick. If you're taking the proper inducement level, then you will take it from the body, right? Post completion of that, what are the next steps that we'll be looking here? The next step will allocate the movement. The next step The next step will allocate the movement from this point of action and place it at here. With this, we can see a movement of rejections completed. With this point of actions, the movement of rejection gets completed. Okay. Post this, what are the next steps that we are looking and following at the current stage? The next steps that we'll be looking for and MC1 levels. And how does the MC1 levels get calculated at this current point of stage? जहाँ जहाँ पे inducement create होता है वहाँ वहाँ पे ही levels allocate किए जाएंगे. And the MC1 levels, there'll be no change as per the morning levels. So I am just reposting the same levels over here so that we will save some time on learning new things. Okay, so this is the current retracement points of MC1, what we will be seeing. So in this point of action, none of the targets is yet completed, right? Post completion of this, what are the next steps that we'll be working on? The next steps we'll be working on is in 1 hour. ओके, 1 आवर में क्या क्या मेजर चीजें आप लोगों को देखनी होगी? सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन का जो हमें चाहिए था वो मूवमेंट कंप्लीट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन का जो मूवमेंट चाहिए था वो मूवमेंट कंप्लीट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन का जो मूवमेंट चाहिए था वो मूवमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है. What are the next upcoming steps that we are looking at the current stage? The next steps are allocating the movements post the new inducement range, right? This is the point of action. This will be your first supply. With the first supply, multiply the version and allocate it with post rejections of the iceberg order. Post the iceberg order is completed, allocate the next new movement, which the target was at 3035.730. वहां से rejection लेके कल के दिन the market gave a break again towards the long side, post taking the SLs of all the people who were in the zone of the eggshell, the circulating supply, right? Post the circulating supply is done, what are the next steps that we'll be looking over here? The next steps we'll be looking over here is on the allocations of what the market will do at the current state, right? So what are the next steps that market can do? This is your previous supply. This will act as your current retracement. Post acting as the current retracement,
What are the next movements that will be looked at? The previous retracement will work as your current drop at this point of action with S2B1 setup, right on the completion of 200%, I guess. Sorry, no guesses, 150%. Right? With the 150%, the market tend to move towards the long. What are the next steps? What is the first thing that we'll be allocating over here? The allocation of the point of actions will be looked as per the inducement range. And where is the inducement range creations? This is our inducement range. So this range of action will be taken under consideration over here, and the continuity. Right? Post the continuity, you saw a pattern and you saw a wick creation at this point of actions, but it was just a small trap for the people because इस point of action में अगर volume देखोगे, there was no volume on that candle, right? No volume in the sense previous जो volume था उससे बहुत कम. In the scenario, let me showcase you that. How does it look? So this was our previous volume, which you can see it on this current candle of red. The major wick creation was created over here, and this was one of the POI range. Post that, the green candle indications over here was just Tropify, and the wick which we just talked about. What do you notice? That zone was not having volume at all. Okay, so at this scenario, what do you have to notice over here? The only one thing that you guys have got trapped if you are in the trade. If you're not in the trade, make sure that you get a proper movement of action to execution. Okay, so this is how it looks at the current state of actions. Right? Post the allocations, what are the next point of interest that we will be looking over here? As per the previous supply, which will be considered of this will be acting as your next movement plan of action. With that plan of action, if you double the quantity, what the market has done here, the market has taken the rejection from exactly 150%. Right? Post the rejection point, what is the setup that market has taken? S2B1 setup. With that S2B1 setup, market has come down at the current range, and all of the sudden there is a volume spike at this point of action, if you notice. Right? So what are the major things at this range? What are the major things that you will be looking at this point of action? At this point of action, there are only two things that market will do. Market will trap all the running candle players who is in the trade and move in the directions of the volume. Okay. So wick is towards the bullish side and the previous high volume was towards the bullish side. Let the market take a liquidity. Post liquidity is taken, we will look for the next plan of actions. Right? Till here, everything is clear, I guess. Post this, what are the next steps that we'll be looking for? We will be looking for an allocation of the movements in 15 minutes. What do we see in 15 minutes? Why does the market started to come down? सुबह में ही allocations यहाँ पे हुई थी, demand. With the demand perspective, we had got a retracement of this plot of line. ये आपको यहाँ पे as a retracement काम करते हुए दिखी. Then the continuity of the movement from this point of actions. Right? Post continuity of the movements, what are the next step? जितना हमारा previous supply यहाँ पे generate हुआ था, उतना ही movement of action हमें देखने को मिलेगी. उस movement of action के साथ market tend to come down again from the plan of actions. Right? At every plan of actions, only one thing is taken under considerations, that is give the movement or else wait for the movement. Right? What do you notice at this point of range? The market took a rejection from 150% again. Right? Once the rejection is taken, what are the next steps that you will be looking at? The next steps you will be looking at is in the circumstances of the long trade. Reason of execution towards the long trade, S2, B2 setup, rejection, sustained inside candle 1, 2, 3, and break and continue. Market कहाँ तक जाएगा as a movement circulation? The first point of action will be always as per the previous retracement points.
With the previous retracement point, the movement will tend to work in the directions of the market. So this is our current supply movement. This current supply movement will get cogitated at this point of thing. एंड रिट्रेसमेंट कितना मिला था हमें, जितना हमें इधर क्रिएशन दिखी थी लास्ट सप्लाई की, उतना ही करंट डिमांड जनरेट होते हुए दिखेगा. Right? Post this, the market had continued and it will follow the price action till the point of mathematical numbers of swing high, swing low, and the retracement point. Okay? So do the math on this numbers at the current stage. 3037.329. Then swing low is 3025.910. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got is 11.419. With that, what is the retracement value that we are currently having? The retracement value we are having is 3029.682, right? 3029.682. Direction is bullish plus 11.419 into 1.618. The target of the current state of actions will be at the range of 3048.15. Okay. Only two things that you'll be working over here. The market should sustain above the current supply candle. This is the current supply candle. इसके ऊपर sustain होता है. Then we will look into the add-on quantities, not prior to that. Okay. Any doubts, guys? Let me allocate the formula also यहाँ पे so that it will be easier for you guys to understand. Okay. This is the current formula that what we are working on. Clear, sir? ओके सर, आपका ही वेट कर रहा था. अभी बाहर हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कुछ वर्क है. कोई नहीं, टेक केयर. ओके. Hit the like button, guys. So there is no doubts in gold. Imran, any doubts? Aviral, I'll clear your part once the screening is done. Okay, BTC का screening हो जाने दो. तुम्हारा जितना भी messages है उसका जवाब देता हूँ. Okay. इमरान क्लियर है आपको? रचित, any doubts? वो नहीं है ना? सुमित, any doubts? Okay. Not as of now. Okay, great. इमरान, कोई डाउट है? बता देना. Moving on to the next step, guys. We'll move to BTC.
Will check the bearish scenario with the number on my own. Thanks. No worries. Great. Keep learning, man. That's how we'll grow. So starting with BTC, this is the POI range what we are currently having. With this POI range, what are the steps that you will be working on? Allot the entire movement of the POI range over here. Yo. Yes. Post the POI range confirmation is taken. What is the next step that we'll be looking at? Allot it from the POI, sorry, post the allotment of POI levels marked out with the inducement range. Inducement range होने के बाद mark कर लेना. So that will be your rejection point of the bias allocation. Post that there was one of the wicks generated over here. This is a mathematical number, right? इसके साथ ही market ने rejection लेके इधर से reverse हुई थी. What are the next steps that we'll be looking at? Where did the market allot from the point of action is the internal liquidity point जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है. With this internal liquidity point, what are the next movements that we'll be looking? This is the previous demand. With that previous demand, we had got a B2 S2B1 scenario. With that, what is the plan of actions that we'll be working on? Multiplying the demand and allocating it with the second candle. Exactly, market took the rejections and the bodies closed under the same demand range, right? Post this, what are the next steps that we'll be working on? This will be your current supply. This is your current supply, what you can see, and the retracement कितना लिया था market. जितना हमारा previous supply generate हुआ है उतना ही movement यहाँ पे ली है market ने, right? Post this, what are the next steps? Post that, allotting the same measurements of the supply and allocations from the point of action. Post allocation of this come down to 4 hours. In 4 hours, you will understand why did the market tend to move to that point of actions, right? First point of action, the swing high, the swing low, and the retracement points. Do the mathematical calculations on the perspective of bullish markets, starting with 28136.66 minus what is the swing low over here? The swing low is 76720. What is the formulative number that you get? 5416.66. What are the next steps that you will be following? The market is bullish, so 79067 point, sorry, 79039.29 into, क्या बोल रहा हो यार, ज्यादा बात करने से ऐसे ही होता है, कुछ नहीं. Okay, so the retracement point is 79039.29. Direction is bullish, so we will add. What is the next step that we'll be working on post that? We will be adding the retracement point 79039.29 plus 5416.66, which is our formulative number, into the golden ratio 1.618, that is 87831.58. That will be your current golden ratio number, what you will be allotting. Bhai sahab. Guys, I'm taking 2 minutes break. Huh? 87831.58. 87831.58. Okay. So once this level is सच में चाहिए. Okay, guys. Once the level is moved
in the directions of the bullish markets, हमारा allocations of golden ratios were fine. The golden ratios were finalized. What are the next steps that will be working at the current stage of action? This is the Saturday movement. In the Saturday movement, we can see there was an inducement plus POI generated over here. With this point of action, market tend to hunt both the buyers and the sellers at this point of action and followed a movement. With that price of actions, what do you notice at this current stage? There was a movement as per this previous supply. The market tend to move only that much and take a rejection from the same point of actions, right? With that plan of action, there was a demand generated. With the demand generation, market tend to continue with a small retracement, right? स्मॉल रिट्रेसमेंट कितना था यहाँ पे? जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट ऑफ अलोकेशन था, उतना ही मूवमेंट ऑफ अलोकेशन के साथ एड ऑन क्वांटिटी ऑफ द प्रीवियस डिमांड 150% विल बी द रिएक्शन पॉइंट, राइट? एंड मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल कितना बनाई थी? जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ रेट थी, उतना ही एट द करंट पॉइंट ऑफ एक्शन में ग्रीन कैंडल जनरेट हुआ, राइट? पोस्ट दैट मूवमेंट कितना आया हमें? 4 आवर्स की पॉइंट ऑफ एक्शन के हिसाब से दिस इज आवर सप्लाई. विद द सप्लाई, मार्केट टेंड टू मूव इन द डायरेक्शंस in today's scenario, right? Post today's scenario's completions, what are the next steps that we'll be looking over here? The next steps we'll be allocating is in the directions of the previous. Come down to 1 hour. In 1 hour, what is the next steps that we'll be working over here? Identifying the eggshells, right? Eggshell zone number 1, eggshell zone number 2, eggshell zone number 3, eggshell zone number 4, and at the current stage where we are having the eggshell, okay, these are the eggshells what we are currently holding. In this point of actions, market will tend to take the liquidity of the movement and then continue the rally. So in that plan of actions, how do you identify the eggshells? You don't have to do anything. Take the parallel channel, allocate it, and you will find the position points. Right? Each and every point of action will work as an parallel channel. It won't be in the dedicated movements for you. Okay. So I'm drawing it over here so it is clear. So I'll showcase you in 15 minutes post the drawing so you can understand why that movements were conducted. Okay, so this point of actions, if you notice in 15 minutes, what did the market tend to do? Each and every point wherever the hunt has happened, right? The hunt has happened because there was a eggshell creation, right? मतलब यहाँ पे हर एक retailers को trap किया गया था, उस trap के साथ movement generation continuity में दिखी थी, right? What are the next steps that will be working over here? Can we allocate each and every movement from this point of action? Yes, definitely. If you want, you can. Else, where is the last moment? The biggest moment of the current is this one. You can allocate this point of actions to this. Okay, and retracement कितना मिला हमें यहाँ पे? जितना हमारा previous allocation point था यहाँ पे demand का, उतना ही retracement यहाँ पे with the continuity. Post that, what is the scenario over here? This was the demand. With the demand, market tend to continue with the movement. And where did the market take the rejection from? From the same point of action. What are the next steps that we'll be currently working on? This will be your swing high. This will be your swing low. This will be your retracement point. Okay, because that is the first retracement we have got. We will be calculating that. Once that target is done, we will take the retracement of this. Okay, so at the bearish scenario, what are the swing high? 87447.53 minus 85592.73. What is the formulated number that we have got? 1854.8. What is the next step? The retracement 86118.62. Direction is bearish. Minus 1854.8 into 1.618. What is the number that we are having? The number we are having is of the scenario 83160.85. 83160.85.
0.85. So these are the numbers what we'll be working on at the current state of actions. Right, post the allocation points, only one thing that we'll be looking and being in the direction of market. The break is mandate. With the break, the continuity will be taken care of. Else, no. Okay. So what are the next steps that we'll be looking over here? We'll come down to 15 minutes. Look for a parallel channel for a hunt. With that hunt, the continuity. Right. So where all are the hunts that we can identify? The hunts can be identified at this point of action number one. Post that, continuity will be taken care of. Right? So this was the action plan. From where did the market tend to take the rejection? From the same point of action. Post that, what do we notice over here? The market was in the zone. The market was in the zone. Right? No doubt, we did execute this point of action from this level of actions to the completion of the next. This trade we executed in the morning. राइट रिट्रेसमेंट कितना लिया था मार्केट ने जितना प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे जनरेट हुआ था उतना ही रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में मार्केट यहाँ पे आई थी राइट उसके साथ प्लान ऑफ एक्शन कंडक्ट थी पोस्ट कंडक्शन ऑफ दैट मार्केट कंटिन्यूड द रैली जो कि मॉर्निंग अलोकेशन था सेम पॉइंट ऑफ एक्शन राइट सो एनी डाउट्स इन दिस सिनेरियो गाइस once you are done with BTC cues in gold you said for golden ratio target price should sustain above the supply candle means another 15-minute candle closes above the supply candle. Please explain after the break. No hurry. Break after a break. Okay. That is for the new entries, right? So that is for the new entries I'm talking about. So if you have seen this, you know that there is a S2B1 creation done over here. What is the next point of action that you will look? Okay, third candle is my execution point as per the rule. If it's a B2, you will wait for the break, right? So third candle execution में लेते, यहाँ पे execution में middle पे बैठते in this red candle, correct? If not, what you could have done, you could have waited for one more confirmation. You could have come to know that this is an insider candle, right? The insider candle was confirmed, then one or two candles, one, two, execution on the break of the insider candle, right? So from that point of action also, currently the market is running with 60 pips. Okay. Any doubts in BTC, guys? किसी को भी कोई डाउट है बीटीसी में? Clear, sir. I think you should start taking breaks, sir. You speak from 3:45 a.m. to 10:30 p.m. Great. So we haven't allotted the moments of formulative numbers in BTC. Let's allot it and keep.
नितेश अविरल का भी बोल दो, नहीं तो फिर से आएगा उसका मैसेज। नहीं, उसका बताऊंगा मैं, हर एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा उसको। कहा गया अविरल? 2 मिनट में करते हैं उसको। प्रशांत, बैक कॉफी प्लीज। आराकू से मंगाओ। इधर है अपना। हाँ, या डबल शॉट एस्प्रेसो, 750 ml of water, 2 scoops of condensed milk, 150 ml of robust roast dark. Araku. Thank you. Okay, what's his first question? Sir, in short, target complete. Oh, हो गया. So what are you waiting for? Which confirmation? Also, please, sir, execution वाला part में बहुत ज़्यादा doubt है. नहीं सर, मतलब doubt है. यहाँ आता है कि I saw the confirmation. Also, I see in which candle I have the enter. I have to enter, but suppose we are waiting for a rejection. I did not figure out when to enter. वो एंटर नहीं हो पाता एंड रिजेक्शन हो जाती है, फिर एसएल बहुत लंबा रखना पड़ता है। ऑल्सो सर, एमटीएसएल वाला पार्ट में भी डाउट है। सपोज 5x रनिंग, टीएसएल विल बी 2x एंड एमटीएसएल विल बी एट 3.5x आई गेस, बट सपोज अपना एमटीएसएल होता है एंड द कैंडल ऑफ द बिग साइज कम व्हाट is coming down to 2.5x or even 2x. So what should I wait for the candle close? Sir, this one was last. Draft ड्राफ्ट करके रख दिया था, सेव करके दिया था। ओके सर, अपना तो कहा था आप लॉन्ग में नहीं हो। अगर मैं तो मुझे उसी समय पे बोलता तो तू भी बैठ जाता। विरल। Okay, so starting with the explanation of the trades in gold. Okay, first execution point was on to the S2 setup, right? S2 बना, insider candle create हुई, 1 2 3 candle break हुई, यहाँ पे फिर से rejection लेके ऊपर आया था. At this point of action was my first execution point. So this was my first execution. At this point of action, my SL was at 40 points. Sorry, 40 pips, which is 4 points. ओके, मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट. कितना मूवमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ था? जितना मेरा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट है उतना मूवमेंट यहाँ पे मेरे को दिखने को मिला था, राइट? दिस वाज माय प्रीवियस सप्लाई. So this supply was my first plan of action, right? Post that continuity, the movement tend to move up. राइट यहाँ पे आपको 200% से रिजेक्शन दिखा. 200% से रिजेक्शन देखने के बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी वर्किंग ओवर हियर? द नेक्स्ट स्टेप्स यू विल बी वर्किंग ओवर हियर इज इंड्यूसमेंट रेंज. So this is my inducement range. This will work as my first SL point, right? So post the first SL point, what do we notice? The market tend to work in this direction? No. रोज एक चीज बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं तुम्हें? प्रीवियस जो सप्लाई होता है दैट विल बी योर फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट. इन दिस सिनेरियो व्हाट इज द फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट ओवर हियर? This is the first rejection. The supply gets converted into demand. This is what tend to be the allocation point, right? Definitely post that, what do we notice at this current stage? That the current stage market हर एक कैंडल में प्रेशर क्रिएट की थी, इंडिसिसिव थी, एंड इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मेजर लिक्विडिटी अलोकेशन भी दिखी थी.
Okay. So with this point of actions, what are the next steps that we'll be working over here? Allocation of the previous inducement range will take the action onto the continuity till the plan. Okay. So this is how you will be looking at the current circumstances and what and when you will be looking for an entry जो आप पूछ रहे थे, right? उस समय कहीं पे भी आपको रिजेक्शन देके कंटिन्यूटी दिखती है तब एग्जीक्यूशन देख सकते हो. Okay, suppose that what are the next steps that we will be looking over here? The next step is allocating the directional rates. What is your previous supply? This was your previous supply allocation. This will work as your current post the rejection point, right? Post the rejection point, what do we notice over here? Why was the next trade taken? We had again a setup which was built on S2B1, right? Third execution, third candle entry. The execution was done on this candle. Post that, here again we'll be keeping 40 pips ka 40 pips ka SL, which is 4 points in gold, right? At this point of action, jo hamara previous 40 pips ka SL hai, that is running in green with 30 pips. Okay, post that confirmation is done, the market tend to move. Market came in a direction, it showed one of the rejections at this current point, राइट. यहाँ पे रिजेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितना हमारा प्रीवियस अगेन मूवमेंट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुई है, फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई कन्वर्जन हुआ है, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई अलोकेशन पॉइंट रहता है उतना यहाँ पे रिजेक्शन दिखने को मिलती है. Correct. So with that plan of action, what is the next steps that you will be looking over here? The next step from this point of action to the rejection point will act as the following, right? When you allocate this, what is the next steps that you will be looking? Where did the market tend to take the rejection from? From the same point of action, right? Yes, from the same point of action. अगर आप जाके 18th के दिन देखोगे, this was our mathematical concept 2.0 का target. So इस point of action में ना हमें volume दिखने को मिली थी, ना कुछ हुआ था. So what is the next step? We will not execute the trades against the trend. The volume indication हमें कहाँ पे मिली थी? At the major point of action, right? Which was at this candle. Yo. Okay. At this point of actions, what are the next steps that we will be currently looking at? We will be looking in the directions of the movement. ये candle आने से पहले एक volume spike दिखा था. That was in this candle. That was in this candle. What did the market showed over here? What is the position of wick? The wick position was towards the bullish. So trade continued in the bullish directions. Right, post this plan of action, you can look into two circumstances. One, you can add the quantity over here with again S2B1 setup, or else wait for the next plan of action. Kaise? Wick creation, with the wick creation, closure, third candle rejection, execution. Right? What is the next plan of actions that you will be working over here? You will be allocating the previous demand, sorry, previous supply with the previous supply continuity. What do you notice over here? We notice a movement break, right? With the movement break, what was the next plan of actions that we had conducted at this point of action? Whatever your previous movement of supply will get into the play, that movement was taken under the considerations. So this is my insider liquidity 1, this is my insider liquidity 2, this is my insider liquidity 3, this is my insider liquidity 4, right? So this 4 action plan will get allocated from this plan of actions. 1, 2, 1, 2, 3, 4. What do we notice over here? Exact rejection from the same point of actions. Once we come to know that market has given a same point of action, what is the next step? The mathematical number. Our mathematical number at this stage was at 3018.
So there was no exit at the current stage of actions. When there is no current stage of exit, what is the next step that we'll be looking at? Next step, we'll be looking for a new entry. Where will be the new entry execution will be taken care by? Through the previous inducement range will be the one point of action. With this point of action, what is the next step that you will be working over here? Do we had a closure? Yes, definitely we had a closure. Post that, what is the next step? Doubling the quantity, right? With the doubling the quantity movement, what do we see over here? The movement has taken the rejection from 150% and the continuity. At this scenario, what are the major things that you will be following? The previous supply will act as your new supply and the continuation of the market. Okay. So in this point of action, what did you do wrong? Or what did I do wrong? Is this the right way to allocate the supply? No, right? So as per the notifications, what happens? जितना हमारा previous retracement होता है, उसके बाद एक proper retracement आता है, correct? So ये हमारा inducement retracement था, तो उसके बाद एक proper retracement कौन सा था? ये point of action ना? जैसे ही वो point of action build हुआ, what did market tend to do? Market comes and hunts down. And major retailers जो आप सीख रहे हो, आप गलती यहाँ पे करते हो. Okay. Post this, what are the next steps that we'll be working over here? Completion, complete hua. Where is the next allocation points that you will be looking at towards the long? Again, in the directions, right? So, kitna point of add-on hua hai? Add-on number one, add-on number two. Where is my third add-on? The third add-on is at this point of action. Why this point of action? The clear-cut movement was indicated only here. Okay. So post completion of the 150%, how do you look at the current stage? This is your supply. Supply कितना आया था जितना आपका previous, उतना ही movement of allocation आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी. Retracement कितना आया था जितना body to body है यहाँ पे retracement, उतना ही movement of retracement आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा. Right? Post completion of that, what is the next steps that we'll be following through? जो हमारा supply point of action है, that supply will be working as your next target plan. Post the next target plan, continuity of the movement. So this was the continuity of the movement. Post the continuity of the movement, the next allocation will be seen at the current stage of action is here. Why here? 150% rejection again. With rejection, you had a proper setup. 1, 2, 3. Right? So with this 3 point of actions, what are the next step that we'll be looking for? The next step we'll be looking for is an allocations in the directions of the market, right? So market में definitely आप यहाँ पे एक short trade execute किए होंगे, right? Short trade execute करने के बाद अगर immediately वहाँ पे आपको कोई भी volume नहीं दिख रहा है, please get out. That is not the reversal zone. Okay. And here, what is the next step that you're looking? Again, S2B1 setup was created. 1, 2, third candle execution, right? Third candle execution हुआ. What are the next steps that you will be following? Execute होते ही लाल पे दिखाया, no doubt. But हुआ है, execute हुआ है तो हुआ है, right? उसके साथ movement continuity कितना तक? 3037 जो कि daily का target था, उस point of action में जो हमारा previous supply था, that will act as your current one. With the current one, market will tend to move in the next direction with the following, the next, with the following, the next, and currently what? अगर ये जाके देखोगे, ये भी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दिया था कि मार्केट इस पॉइंट ऑफ एक्शन से एक बहुत बड़ा रिवर्स होगा, राइट? 150 पिप्स टू 200 पिप्स बोले थे, 160 पिप्स का रिवर्सल दिया था. Okay, so that is how you look into the circumstances of a directions and executions and be in the market in the swing. Oof. सर 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 मैं तो वेट कर रहा था, मुझे कंफर्मेशन दिख गया था, बट देन कंफ्यूजन की वजह से नहीं बैठा था. ओके.
Sir, which candle you entered in this case? Sir, hello Manan, good evening, how are you? No. Sir, can you share BTC analysis for next week? Definitely, Veer. Give me 2 minutes and welcome to the stream. सर आप रुकते नहीं हो ना, एक फ्लो में सारा बोल देते हो। अब उसमें भी गलत है क्या? यो सो यहाँ पे MTSL कहाँ पे था, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। कमिंग टू दैट पॉइंट, हिट द लाइक बटन गाइस, राइट? So post completion of this, execution number 1 was here, execution 2 was at here, execution 3 was here, right? With the follow through. Small trades, same day scalp trades, sorry, intraday trades, right? Was executed in this motions wherever the directions were concluded. The ID trade 1 was here, ID trade 2 was here, ID trade 3 was here with this point of action. Okay. Coming down to all the circumstances. First trade, MTSL point कहाँ पे था? This was my MTSL point. Where was my TSL? This was my TSL point. Okay. Second trade of action. MTSL कहाँ पे था? First trade के नीचे इधर same point of action. SL change नहीं हुआ था यहाँ पे. Okay. Then the third trade of execution of the swing trade was here. The market tend to move over here. यहाँ पे इस point of action में there will be no change. But you can change. You can follow through at every red candles. हिट हुआ तो हुआ, बड़ा कैंडल आया तो आया, क्लोजिंग ग्रीन में होना चाहिए। ओके। एसएल देना है कब? जब आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो ना, तो समझ लेना कि गलत डायरेक्शन में बैठे हो और छोटा एसएल दे के निकल जाओ। बट नेवर टेंड टू सिट इन द डायरेक्शंस ऑफ द मार्केट एंड डर के निकलना नहीं है बैठने के बाद। डायरेक्शन पता है, मैथमेटिकल नंबर पता है, डरना क्यों है? हाँ, डरना क्यों है? अगर स्लो बोलते हो तो लबलबाते हो, अगर बोलना शुरू करते हो तो रुकते ही नहीं हो। 110 pips running, you speak like butter melting on the bread. कोई भी डाउट है किसी को भी, प्लीज डू आस्क। नेक्स्ट सवाल किसका है? वीर का। इमरान, कोई डाउट? आज इतना शांत है सब लोग, कैसे? मतलब ये शॉर्ट वाला ट्रेड नहीं लिए थे, ये शॉर्ट वाला ट्रेड भी लिए थे। दिस इज कंसिडर अंडर आईडी, दिस इज नॉट कंसिडर अंडर स्विंग। आईडी is totally different, in swing is totally different. We don't mix both. अगर आप मेरे को बोल रहे हो 200 पे आप मिस कर रहे हो, आई एम नॉट a person who will miss. Yes, I'll miss when it's not with my plan of actions. I will miss it when there is no setup of mine. इतना क्लियर कट सेटअप देने के बाद भी आप नहीं बैठ रहे हो, then right? एग्जीक्यूशन पॉइंट कहाँ पे था? थर्ड कैंडल पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन था B2 S1 के साथ. Post that, the next entry plan was over here with proper, again,
S2 B2 के साथ कैंडल इनसाइड कैंडल सेकेंड या थर्ड कैंडल एग्जीक्यूशन। अगर वो भी मिस हो गया था फिर से आपको यहाँ पे एंट्री दी थी विच वॉज एट S2 B1 थर्ड कैंडल एग्जीक्यूशन, राइट? क्योंकि मैथमेटिकल नंबर जब नीचे है यू नो डेफिनेटली विल सिट इन द डायरेक्शन ना। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से तो रिजेक्शन लिया है। What is the number? 3026565. Where is the market taking rejection from? 3026.366. आप लोग एग्जीक्यूट ऐसे करते हो कि लाइक ओ यार मिस हो गया। एसएल दो चलेगा, देने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। देना कहाँ पे है? गलत बेट के देना है। इतना ये जो तीन कैंडल है ना, थोड़े लोगों को बहुत बड़ा मुंह लगता है। कितना पॉइंट का मूवमेंट है पता है? 200। ये पॉइंट इतना बड़ा मूव करके आप बैठे रहोगे तो आप पकड़ोगे कैसे? राइट? इसमें भी वो उनका प्लान ऑफ एक्शन कहाँ पे रहता है बोलो? सेकेंड कैंडल आधा खत्म होने के बाद उनका प्लान ऑफ एक्शन रहता है। एंड यहाँ पे एसएल देंगे, उसके बाद बोलेंगे मैंने तो एसएल दिया था। जब एसएल देता हो, जब एसएल रखता हो तब वो हमारा डायरेक्शन में नहीं आता है। जब एसएल नहीं देना चाहता हो वहां पे मूवमेंट अच्छा तरीके से होता है। दिस आर द थिंग्स व्हाट आई हियर। सो सेम फॉलो द रूल्स। राइट? सेटअप क्लियर कट बताया था ना। S2 B1 मूवमेंट कंटिन्यूटी। एंट्री करना है डेफिनेटली करो, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं, बट डायरेक्शन तो देख के करो। मेरे को लग रहा था, माई माइंड वॉज सेइंग दैट द डायरेक्शन इज दिस। ट्रेड वॉट यू सी नॉट वॉट यू थिंक। ओके, नो चेंजिंग। वीर ने पूछा था ना, बताएं। सर कैन यू शेयर बीटीसी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक? डेफिनेटली एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। स्क्रीनिंग जाके देख लेना। ओके, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? डेली टाइम फ्रेम, राइट? दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। Target is at 94961. Veer, okay. If the market tends to break 83160, then the current analysis will change. Else, the next week target is 94961. 1 in the morning, Nifty was a gap up opening and previous target were hit. But later we marked the MC2 target for long. You also said that there are chances that it might come down and grab the liquidity, not immediately. Huh? This week and next week. Clearly said that as well. Okay. And there was one more notification because many of the traders were there in Nifty long and today was Nifty expiry. So they were panicking to exit from the trades. Okay. So you also said there are chances that it might come down and grab the liquidity. And as the opening was gap up, there was chances that it might fill the gap. So what made us decide that today is not the day that it will come down to grab liquidity? Two, why the Nifty long was given in the morning after Nifty
Why the Nifty long was given in the morning after opening? Nifty retraced and formed S2B2. So here, what are the chances that S2B2 will fail or that doesn't happen? S2B2 formation was the sole reason or something else was also considered? सर बीटीसी का व्यू ही बता दीजिए कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक की कहाँ तक जा सकता है। सर अभी तो बोला अभी नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस दे दिया ना। चलो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देखना है। अलोकेशन पॉइंट, what is the market currently doing? Market has draw down a point of interest over here. With this point of interest, market tends to move in a bottom side, correct? With this demand range, the market tend to take to break. Post the break, what is currently market trying to do? Market is trying to move in a direction of the previous supply. Which is the previous supply? This is the previous supply at the current state of actions, right? This will be the next plan of action. And where is that plan of action exactly stating at? 93326. Okay, so this will be your next week plans. If the market doesn't tend to create a S2B1 over here, the market will come down till this point of action, is what I was trying to say. In that scenario, this was the level what I was indicating you. Next week का target हमारा आके 94961.51 तक का होगा. If the market breaks and continue 87874.81 in the swing trade. Okay, is that clear? Yes, Nilesh, 2 minutes दे दो. I will explain your morning comment as well and this comment as well. Okay, both the comments. Hit the like button, guys. All the new members, welcome to the stream. जो भी doubts है, please do drop in the comment. गोल्ड को क्या हुई मतलब? मत बोलो कि तू रनिंग में ट्रेड लिया था। अगर नीचे कंटिन्यूटी करना है, सर मैं नहीं लिया हूँ। ओके, अगर मार्केट नीचे को कंटिन्यू करना है, मार्केट विल गिव यू द इंडिकेशन, डोंट वरी। ओके, क्लियर सर, ग्रेट वीर। सर कितना शक करते हो मेरे पे, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा है करके। 2-3 बार नहीं बोलूंगा तब तक तुम अगर ट्रेड में हो तो भी नहीं निकलोगे। बाद में बोलोगे सर ये हो गया, मैं सोचा था यहाँ से रिजेक्शन लेगा। उस सोच में कुछ और ही हो जाता है। कूल है। देन बीटीसी में किस प्राइस पर लिमिट ऑर्डर प्लेस करें? जहां पे तुम्हें
लॉन्ग के तरफ ये पैटर्न दिखेगा ना 1 आवर में, राइट? ये पैटर्न दिखेगी, ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का एंडिंग पॉइंट होगा। उस पॉइंट ऑफ एक्शन पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते। ओके, द एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट जो दिखती है तुम्हें, उस पॉइंट ऑफ एक्शन में एग्जीक्यूशन होगा। अभी 18 मिनट है यार कैंडल क्लोज होने में। ओके, अगर नीचे के लिए देखना है, मार्केट में आपको ऊपर की तरफ सेम पैटर्न दिखेगी, त्रिशूल। ओके, दैट विल आल्सो बी नियर MC2। वहां पे थर्ड कैंडल पे आपका एग्जीक्यूशन होगा लिमिट ऑर्डर। क्लियर वीर? सर मैंने फंडेड अकाउंट लिया है। भाई साहब, $25K का, in which I have to clear $1,500 two times to get the account. Current account balance is 25,400। ओके, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ना? ओके सर, थैंक्स, नो वरीज वीर। व्हाट इज द लेवरेज यू आर गेटिंग मनन इन योर फंडेड अकाउंट? थैंक यू फॉर द कॉफी वर्षा। कल लिया था। ग्रेट। लेवरेज कितना है बोलो? वन इज टू 30 इन मेटल। ओके, मतलब 0.1 लॉट के लिए 10,000 चाहिए तेरे? नहीं नहीं, 1 के लिए 30,000 चाहिए। ओके, समझ गए। एंड BTC 1:20 है क्या? So this is the plan of action of today's, no? Yeah। क्या हो रहा है? एंड ड्रॉडाउन कितना है उसमें? 1:2 है। ओके, फंडिंग पिप्स। कूल। ओके, सो Nilesh, here two reasons why we were not so convinced to be in the downside trades. Definitely we were talking about market एक बड़ा सा रेड कैंडल क्रिएट करेगा इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते पे, बिकॉज बहुत सारा लिक्विडिटी है, गैप डाउन है, गैप अप ओपनिंग है, करेक्ट? इन द प्रिसिजन्स ऑफ द मार्केट, what did the market is trying to do? Market has followed each and every mathematical number in this point of action, right? With the calculation of that, what did market tend to do at this point of action, right? आज के दिन में आके यहाँ पे सब लोगों को इतना कन्विंस कराया ना कि मैं आज नीचे के लिए जा रहा हूँ। कैसे करके बताता हूँ।
How was that conviction? How was that conviction given to the retailers? Right? What do people do? People mark first candle, 15 minutes candle, high and low point. Okay. Did the market give the confirmation of the closure below the candle? Next candle भी ready दिखाया था, तो most of the retailers could have executed the trade at this point of action, correct? So here, जो किसी को भी नहीं पता था वो वाला पैटर्न इधर बिल्ड हुई थी. What was that? Let's take this entire candle. Okay. In this candle, let's take the green box. Okay. And I will mark the green box over here. Audio clear, video lag, even after refresh increase. Guys, और एक बार refresh कर लो, then we'll start. Okay. बता देना कि there was no lag, then we will start the video again. Okay. 750 for daily, 1500 max. Okay, समझ गया. Okay, clear होते ही बता देना guys, refresh करने के बाद. Once the chart is clear, I will start explaining so that you guys can have a clear visibility on the same. सर आप वीडियोस हिंदी में पब्लिश कब करोगे? थोड़ा समझने में दिक्कत आता है. बहुत जल्द वी आर वर्किंग ऑन इट. बहुत जल्द आएगा. Seems to be clear now. Okay, great. Okay, आज के दिन में what did market try to do? First candle, market created a movement. With this, what does the retailer do? 15 minutes candle का ये high point है. So let's mark the high. Retailers perspective के हिसाब से चलते हैं at the current stage. Daily मीन्स जो 15 minutes का opening candle है उसका लो. मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? ब्रेक करके क्लोजर दिखाई. उसके साथ कंटिन्यूटी में विक क्रिएशन किया था. Most of the retailers got stuck at this point of action, right? Q. एक चीज यहाँ पे बिल्ड हुई जो किसी को भी नहीं समझ में आई. I have explained this in the live as well, right? ये हमारा विक है, उसके साथ ये हमारा बॉडी है. Okay, this is our green body. Okay, I am marking it over here. क्योंकि हल्का सा विक ऊपर के लिए है, so I am taking that in consideration. So we will take the entire body of the red. Okay, what is the next thing the market tend to do? We will merge it inside this. Okay,
Post merging inside this, what is the next thing? I will close this red candle to the minimalist. Post closure, I will close this point of action also to the minimalist of the red. What is this pattern you guys call it as? Right? Right? At this point of action, आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे हैमर क्रिएट हुई थी, हमारे हिसाब से यहाँ पे बाइंग प्रेशर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिख रहा था. ओके, तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे रिटेलर्स को ऑब्जर्वेशन दिया था कि लाइक नीचे के लिए बैठो, ऊपर के लिए जाने जितना मेरे पास वॉल्यूम है ही नहीं. जब वो वॉल्यूम है ही नहीं करके जब कंफर्मेशन दिया, what does the major retailers will tend to do over here? They will start allocating the short rates again. Why? Resistance है, red candle create हुआ है, next candle में छोटा सा wick के साथ है, definitely market will come down. इतना confirmation के साथ, what is the second confirmation that all the retailers had? Bank Nifty was moving in the bearish movement at that current stage of action. Right? Timing के हिसाब से 11:15 कैंडल ये है, 11:15 कैंडल ये है, रेड रेड. तो दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, वरना एसएल उड़ेगा, डेफिनेटली एसएल उड़ेगा, नो डाउट. बट जब हमारे पास दो कंफर्मेशन है क्लैरिटी की, स्पिनिंग टॉप की भी कंफर्मेशन है, हैमर का भी कंफर्मेशन है, उसके साथ अलोकेशन पॉइंट का भी कंफर्मेशन है, ले लो. बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट प्रेशर अलोकेशन पॉइंट बता रहा था सुबह में ही कि लाइक वो ऊपर ही जाने वाला है, बट वो समझे नहीं कोई. दैट वाज द रीजन most of the members of us were asking, we will get out nifty expiry, we will get out nifty expiry. Right? आज मैं बता सकता हूँ निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है. हमारा बाइंग लॉट साइज जो था ना, दैट वाज एट 1.50 add on quantity strike price, right? And our next strike price was buying at 4.54. The next strike price was buying at 5.64. The next strike price buying was at 7.10. The next strike price buying was at 8.10. Right? This were the add-on quantities which we have done from 12. Right? Starting positions allocation were done through the major allocations in ATM and OTMs because this was a proper swing trade hold. राइट? जाके देख लेना, ये प्राइस ऑफ एक्शन आपको दिखेगी 23,150 की, ये प्राइस एक्शन आपको दिखेगी 2300 की, सब सी साइड. ये प्राइस एक्शन आपको दिखेगा 23 की, ये प्राइस एक्शन और ये प्राइस एक्शन एक ही इसकी थी जो कि 22,950 की. ओके, this was the buying allocations that we had looked at. So at this stage of action, what did market tend to do? आज के दिन डेफिनेटली यहाँ पे प्रीमियम्स ड्रॉप हुए, डीके हुए, यहाँ पे प्रीमियम्स हमारा भी हुए थे डीके. पोस्ट दैट डीके एज वेल, व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? व्हाई वाज दैट कॉन्फिडेंस वी वर हैविंग कि मार्केट विल कम अप टुडे? एंड ऑप्शंस जो जो लोगों को देखना था उन लोगों को भी दिया था ना, ये वेट लाइंस उनका ही तो है. राइट? सो बिकॉज एक पॉइंट में समझ लेना, हमेशा एक करता ही करता है कि कितना भी शातिर ट्रेडर क्यों ना हो, अगर उसे मैथ्स नहीं आती है ट्रैप जरूर करेगा. हाँ, डेफिनेटली वो बच जाएगा छोटा एसएल देके, वो यहाँ पे या यहाँ पे निकल जाएगा, बट दूसरे लोग नहीं करेंगे क्योंकि बाइंग स्लो है और थोड़ा देर होल्ड करता है, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं फॉलो करेंगे. देन ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद हमारा जैसे ही TP1 हिट हुआ, वी क्लोज द स्ट्रीम. व्हाट डिड द नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली डू एट दिस पॉइंट? टेक अ रिजेक्शन, कंटिन्यूटी. एंड डिमांड कितना फॉलो किया है? राइट? जितना मेरा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट था उतना ही तो फॉलो किया है, उससे ज्यादा थोड़ी.
दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ कंटिन्यूटी में ब्रेक हुई थी. दिस इज द सेकेंड प्राइज ऑफ एक्शन. दिस वॉज अ मैथमेटिकल नंबर. एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से रिजेक्शन. बैंक निफ्टी तो मैंने चेंज भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था वही टारगेट से रिजेक्शन लेगा. एक्स्ट्रा लेवल्स लगा के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला था ना. मैं आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहता था. दैट्स द रीजन वी डिडंट वर्क ऑन बैंक निफ्टी. वी जस्ट चेंज द अलोकेशंस ऑफ निफ्टी. राइट? क्योंकि आज का दिन में ये जो रिजेक्शन था ना, ये भी मैथमेटिकल रिजेक्शन ही था. नो डाउट. Still, why we were having that confirmation, the movement wasn't completed over here. फर्स्ट कंफर्मेशन वी हैव दिस. बैंक निफ्टी उस समय पे यहाँ पे खेल रहा था. इस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट अभी भी 400 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट था. हेंस वी वर 100% confirmed without taking the mathematical number, market will not tend to reverse. हमेशा याद रखना, डायरेक्टली वो रिवर्स नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो. राइट? सो 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 9 days में 2 दिन तो कुछ होता ही नहीं है, भूल जाओ. बट रिमेनिंग 7 days, डिड इट फॉलो द स्विंग वॉट वी वॉन्टेड? डिड इट फॉलो द मैथमेटिकल नंबर? राइट? पूरा 10 दिन का लाइव स्ट्रीमिंग देख लो, मॉर्निंग सेशन का. हर एक स्विंग में हमने सिर्फ पोजिशन ऊपर के लिए ऐड करते गए, ना कि हमने बोला है कि शॉर्ट का ट्रेड देखो यहाँ पे. क्यों? जब तक मार्केट इंडिकेशन नहीं देगा, देयर विल बी नो एग्जीक्यूशंस इन द रिवर्सल. डेफिनेटली बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, हाउ टू लुक इन परसेप्शंस ऑफ द साइडवेज, पीओआईस एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ इंडाइसेस. राइट? दैट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट. Nilesh, am I clear at this point of action? For my morning question related to supply and demand, I took 18th March 15 minutes Indian time, 12:15, 12:30 candle supply and applied it on 19th March 12 a.m. and for 150%. I gave you the answer in the morning only, no? You said okay also. आप क्रिप्टो ऑप्शंस की एडजस्टमेंट की बात कर सकते हो क्या? क्रिप्टो ऑप्शंस में एडजस्टमेंट होता है क्या? आज ही पता चला मेरे को. बट यस, डेफिनेटली पंकज, अगर आपको सीखना है, आई विल टीच यू, नॉट एन इशू. वहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं होती है. अगर क्रिप्टो ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो, एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी होगी. वो क्या है? सर्कुलेटिंग सप्लाई के नजदीक में आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करोगे. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स एंड ऑल. सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऑपोजिट में अगर आप बैठे हो, डेफिनेटली आपका प्रीमियम स्मेल्ट होगा, डीके होगा. दिस एंड ऑल आर सर्कुलेटिंग सप्लाईज. ठीक है? Make sure that you sit in the directions of the market, not against to the market. Hmm? Pankaj? Definitely we'll speak on it. अगर वीडियो चाहिए, वीडियो भी बना देंगे. डेस्क 7 में कौन है वर्षा? Okay. Hit the like button, guys. Clear, sir. Thank you for the explanation and for always being so patient with my question. Option selling करते हैं. Yes, you told, but is this correct or not? Because 2 days back when BTC reached MC2 level, I told that it will come to 82, 192 on the basis of supply only. No, you said on the basis of demand. That time you were having the problem with understanding retail's perspective and our perspective. I remember that. And that point of action was here. Where was this?
Yes, your asking was over here, this point of action, correct? Because our execution, mathematical number rejection, continuity, यहाँ पे डिमांड दो डाले थे हम, दो डिमांड के साथ हमने क्लियर कट बोला था सेकंड डिमांड तक आएगा नहीं, एंड मार्केट टुक द रिजेक्शन फ्रॉम देयर ओनली. व्हाट डिड मार्केट जनरेट ओवर हियर? S2 सिनेरियो क्रिएट किया था, उसके साथ लॉन्ग हुई थी ट्रेड, उस प्राइस एक्शन के साथ कंटिन्यूटी, right? In the continuity, what did market tend to do over here? Market tend to hunt each and every players with creation of circulating supply. Post the circulating supply was created, market went through in the direction, right? In this direction point, what are the major things that you have to be looking? और एक बार explain करता हूँ, ध्यान से देखना. Okay, so at this point of action, what is the first plan that you will be working over here? This was your supply, right? Let's start from this. This was your first supply point of action, retracement as per the previous supply. This is your previous supply. With the previous supply, the movement got allocated at this point of action. With that, market tend to move in the direction and allocate the movement, right? So ये जो आप पहले में allocate किए थे ना, ऐसे, समर्थ, this is wrong. Okay, so never do that. Post, what were your next plan of actions? You had allocated here an yellow line. I saw your video, sorry, message. This was your yellow line. Here you had marked 150%, right? Continuity, straight 150% rejection. No, that is not how it is done. Okay, so post the allocations, what did market do at this point? The market tend to move in a direction of the bearishness. From this point of action, market took a rejection and continuity, right? This also wasn't being marked, right? Post the closure, what did market generate over here? S2B1 scenario. With the S2B1 scenario, what are the steps that you will be following here? This is your previous supply. With the previous supply, what is the rejection that you got? As per the previous supply, the current demand got converted, correct? This was the previous supply. It got converted over here and worked as the demand. And what will be the continuity at this point will be? As per this, na? This will be the next plan of action, na? Why will the market move like this? And then why will the market come like this? Sorry. Post that, why will the market come again in the double of the quantity? And this point of action में 150% mark करना क्यों है? Because at this action, what did you notice? We had a rejection now. Do we have a movement directly? No, right? When there is no movement directly, how can you mark the second supply or the demand? That will always be wrong. So make sure going forward, if there is no retracement, then you double the quantity. Else, make sure you add a second supply range. Okay? सर वो कोई और पंकज होगा, मैं तो आज ही आया हूँ. वेलकम टू द स्ट्रीम एंड द फैमिली. ओके, सो डेफिनेटली पंकज, आपको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम एडजस्टमेंट्स कुछ नहीं करते, right? If we are looking in an options of a proper movement, definitely we will work in the math, and there will be only naked selling what we do. We don't hedge or we don't adjust the movements through selling and buying. Okay, okay, got it now, thanks. आपको उसका डेट भी याद है? यस, पता था. क्या बाइंग किया है? कहाँ से आया मनन? इतना जोश कहाँ से आया तुम्हें? ग्रेट मनन, कीप इट अप.
ओके, इमरान नहीं है क्या स्ट्रीम पे? And definitely, whatever doubts you have related to market, no Pankaj. सर आ गया, कहाँ पे आ गया? मैंने कहा आप वो बात ही मैंने कहा आप वो बात ही दोगे कब निकलना है अगर गलत होता है तो। सर आई वांट टू डू स्विंग विद दिस अकाउंट, प्लीज हेल्प मी विद दैट। भाई फर्स्ट टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है सही डायरेक्शन पे। छोटा छोटा ट्रेड तो ले। मनन, ये किस बेसिस पे बाई किया? इमरान मैं क्लियरली बताता हूँ किस बेसिस पे बाई हुआ था। राइट, मैंने वो डिमांड कंप्लीशन डाला है ना, उधर से रिजेक्शन लिया ना, उधर बैठा है वो। यस सर, अभी आया जस्ट। एनी डाउट्स यू आर हैविंग? बट ही हैज द करेज टू होल्ड द ट्रेड्स, ही इज गुड एट इट। बट वो एसएल नहीं देता, वो एक ही प्रॉब्लम है मनन का। Also, one more confusion related to yesterday's BTC movement. It has moved in bullish directions, but there were too much pullbacks taken on every third candle. So, do we need to allocate for every pullbacks? Which basis are you talking? That was a circulating supply. You're talking about yesterday, no? दिस वॉज अ सर्कुलेटिंग सप्लाई। इस सप्लाई में भूल जाओ, अगर स्टार्टिंग में एंट्री हुआ है वेल एंड गुड, एंट्री पॉइंट में एंट्री हुआ है वेल एंड गुड। वंस यू गॉट एन कंफर्मेशन कि दिस इज गेटिंग इन अ पैरेलल चैनल, समझ लेना दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्शन, दैट्स ओके, यू मिस दिस ट्रेड, राइट? सो पोस्ट दैट यू विल गेट द सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे मिला ना आपको फिर से S2B1 सिनारियो के हिसाब से, right? Execute only with the patterns, not against to the patterns. 60 pips running, SL देने के लिए ही तो लिया। ओके, उसके बाद क्या लिखा भाई, क्यों हटाया? इमरान कुछ पूछ रहा है, बताओ उसको। मनन किस बेसिस पे बाई किया, जवाब दो। आई एम नॉट ट्रेडिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट टेस्टिंग। यस, in testing also you should test in a right way, no, not in the wrong directions. TSL at 2x on system, भाई 10 pips में रखो। 1:30 का अकाउंट में तेरे को 2x का मूवमेंट कैसे आ गया जनाब? हाँ, इमरान भाई सामने जोन पर था एंड ऑल्सो डिमांड कंप्लीट हो गई। सो आई टुक द ट्रेड विथ अ स्मॉल साइज। काइंड ऑफ। All the new members, welcome to the stream. If you're liking the channel, if you're learning from it, do hit a like, share, and subscribe. कोई भी डाउट है पूछ सकते हो in related to markets, we can help you out over here. लेवरेज नहीं देगा,
रहा। 1:30 का लेवरेज है, खुद बोलने के बाद 2x कैसे बोल रहे? 1:1000 या 1:2000 में थोड़ी ट्रेड कर रहे, 2x बोलने के लिए। द ट्रेड ऑन लॉट से उस हिसाब से 1x 2x देख रहा हूँ। हाँ समझ गया, एक्सनेस के हिसाब से देख रहा है। Hit the like button, guys. One more thing, execute the trades fearlessly, following the risk managements, trade emotionlessly, be in the directions of the market, following the rules. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Make sure you sit patientfully till the targets are hit. आएगा तो पूरा टारगेट आएगा 1:10 का, जाएगा तो CTC प्लस 10 पिप्स। ETH का भी बता दीजिए सर। ETH का पॉइंट ऑफ एक्शन बहुत बड़ा है नेक्स्ट वीक का। बहुत बड़ा है नेक्स्ट वीक का प्लान ऑफ एक्शन, लॉन्ग के तरफ है। अंडरस्टैंड द वॉल्यूम। मार्केट में ऑलरेडी इंडिकेशंस आ चुके हैं। द रेड कैंडल 1 which is indicating the buyer's position, red candle 2 indicating the buyer's position, right? अगर ये जो वीक है, 3 दिन में अगर ग्रीन क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे विक क्रिएट करके बूम, कितना मूवमेंट आएगा? allocated through the directions. This is your previous demand. Previous demand के साथ continuity में multiplied version. This will be your next plan of action. Right? Post this, the market continued here. You will be doubling the quantity. What do you notice? Exactly from 200%, the market took the rejection. Right? Post 200% rejection point. What has market done? Market has taken the previous demand over here and completed the range out. राइट? पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द रेंज आउट, मार्केट ने रिट्रेसमेंट कितना लिया है हर एक पॉइंट ऑफ एक्शन में? सप्लाई जितना डिमांड था प्रीवियस बाई पॉइंट में, उतना ही रिजेक्शन करंट बेरिश मूवमेंट में फर्स्ट, जितना बेरिश मूवमेंट का फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट था उतना ही सेकंड, राइट? उसके साथ कंटिन्यूटी में जितना बेरिश पॉइंट ऑफ एक्शन था उतना ही मूवमेंट यहाँ पे एट द करंट स्टेज, राइट? सो विद दिस प्लान ऑफ एक्शन, अगर मार्केट लेवल ऑफ 2100 2111 ब्रेक होती है, डायरेक्ट टारगेट ऑफ योर्स विल बी, ये ब्रेक होती है तो फर्स्ट टारगेट ऑफ योर्स विल बी दिस, which is 2590.63 on the continuity. Okay, hit the like button, guys. इतना जोश कहाँ से लाते हो सर? When you love doing what you love to do, जोश ऑटोमेटिकली आता है। Okay, great. Yo, welcome back, guys. You, how are you? Where is Varun? Not been seen. Varun is in live. Good evening, Agastya.
No, no, Harshad, be in the directions. Don't go against the directions, guys. कितना बार बोलूं? All the new members, welcome to the stream. जो भी doubt है पूछ सकते हो. With that, make sure don't execute the trades in running of FOMO. 700 points in BTC running. I'll give reply to you in 10 minutes driving. You'll get the reply in 10 minutes, bro. सोलाना आने दो यार उसे आराम से $95 तक आने दो उसे. Anyone trading Forex? Please let me know so I can explain them out. पंकज किस किस सिनेरियोस पे ट्रेड करते हो आप? इसका टारगेट बहुत लंबा है. अभी इसको 3 पॉइंट और नीचे आना है. आराम से बैठो. कूल ब्रो. गाइस, क्लियर कट यहाँ पे एक सेटअप बनते हुए दिख रही है. अगर मार्केट नीचे जाना है तो इंडिकेशन देके जाएगा बोला था. होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड. इमरान, नीलेश, समर्थ, वरुण and all the LTD members. Hope everyone can understand what is the indication. I am in the right direction. अगर S2B1 समझ में आता तेरे को खुद पता चल जाता. Are you in the right direction? सर बेचारे का ट्रेड चल रहा है. पता है ट्रेड चल रहा है. सीखेगा ना. मैं थोड़ी बोल रहा हूँ उसे एग्जिट करना है. उसका TSL CTC प्लस 10 पिप्स में है.
जिन जिन का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ उन लोगों को बोल रहा हूँ। इमरान, hope you guys are able to identify what it is. भाई निकलना क्यों है? रुकना। मैं रिवर्टिंग ट्रेड्स लेता हूँ। ओके। मेरे हिसाब से रिवर्टिंग ट्रेड्स का मतलब क्या होता है पता है? टेक्निकल एरर्स के वजह से ट्रेड्स जो पंच हुआ है, दैट विल कम अंडर रिवर्टिंग ट्रेड्स। राइट, मिस कम्युनिकेशन के वजह से ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ है उसके वजह से, दैट इज अ रिवर्टिंग ट्रेड। राइट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जब नहीं मिला होता है तब जो पोजीशंस अलॉट होते हैं उस डायरेक्शंस में वॉलेटिलिटी जब बिल्ड होता है उसे बोलते हैं रिवर्टिंग ट्रेड्स। राइट, बाय मिस्टेकली आपने रिमिट ऑर्डर गलत जगह पे प्लेस कर दिया, उसके साथ ऑर्डर मिसमैच हो गई, दैट विल बी योर नेक्स्ट लिमिटिंग, सॉरी, रिवर्टिंग ट्रेड्स। सो मेरे हिसाब से आप ये तो नहीं बोल रहे हो ना? 1 2 3 4 5, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ना? सर क्या फिर ले रहे हो मेरी? पंकज, इसके बारे में तो नहीं बात कर रहे हो ना? प्लीज बता देना। मदन सर इज सेइंग S2B1 जनरेट हुआ है, 3041 के पास हुई है, डायरेक्शन बेरिश है। भाई वरुण, क्या कर रहे हो यार? मीन रिवर्टिंग ट्रेड, व्हाट इज इट? नहीं, वो मतलब नहीं है, मेरे को वही मतलब पता था।
बिकॉज रिवर्टिंग का मीनिंग आके ही वही है ना, which you can't undo post placing an order through a miscommunication, or there is no right direction of action. Such traits are known as revertings. रिवर्सल बोल सकते हो. Okay, great. Got it, Pankaj. Fancy. BTC का बेरिश सिनेरियो कब हो सकता है? BTC is currently in the bearish scenario ना. मार्केट सुबह के 3 बजे से लेके अब तक गिरी तो रहा है. बुलिश सिनेरियो कब हो सकता है पूछोगे तो बता सकता हूँ. एंड खत्म कहाँ पे होगी वो पूछोगे, बता सकता हूँ. BTC का बेरिश सिनेरियो तब बंद होगा जब लिक्विडिटी प्रॉपर तरीके से लिया हो. ओके, so this is a buyer's allocation point, right? Post that, there is a circulation which has been created over here. With the circulation there is a break of it. With that, currently market is trying to hunt down them, whoever has taken the trades in running. Once you get in confirmation, the execution will be taken place at the same point of action. Okay, दोनों बता दीजिए. लॉन्ग के लिए टारगेट हमारा आके जो हमारा प्रीवियस पॉइंट ऑफ एक्शन है, वो पॉइंट ऑफ एक्शन विल एक्ट एज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. सो इन दिस सिनेरियो, this is the thing that we'll be looking at the cloned mode at the current scenario. Okay, and swing low will be this, swing high will be this will be your retracement point, right? Do the mathematical 2 formulation, you will get the number that will be your first target. Okay, वो भी करके बता देता हूँ, just give me a moment. Right, bullish scenario okay, swing high is at 85505.03. Swing low is at current stage of 84779.44. The formulative number is 725.59, and the retracement what we have got at the current stage is at 85101.96. So direction is bullish. 85101.96 plus 752.59 into 1.618
Your first target of allocation will be at 86, 86 to 75.96. अगर ये break होता है, then the next plan of action will be taken under the consideration of the intermediate ratio, which will is at 86553.14. These are the levels for the long at the current state. Short का level clear कर डाला है. जब तक threshold create नहीं होती है, no plan of actions. Okay. So let me change the scenario. This is the major scenario. This is the new scenario. Okay. Okay, Pankaj, clear है? All the new members, कोई भी doubt है पूछ सकते हो. Stream will be there for next 25 minutes. If you're learning from the stream, if you're liking it, if the content is good, do hit a like, share, and subscribe. सर कुछ नए सिखाओगे बोले, कोई मान ही नहीं रहा है नए सीखने के. They want to get perfect. होने दो. Good. हाँ जी. Is there a way to know that circulating supply is generated? Parallel channel use करो, पता चल जाएगा. दुनिया भर का retailers parallel channel लगा के चल रहे होते हैं. The shortest way to identify. Formula थोड़ा लंबा है. बता दो सर फॉर्मूला. इमरान, what is the trade that you are currently in? किस ट्रेड में हो?
80 pips running. Hit the like button, guys. ये फॉर्मूला मेरे सर्च के ऊपर से गया. रहने दो, मैं चैनल पैरेलल चैनल डाल दूंगी. योर विश अंबिका. सो होप जितने भी लोग देख रहे हैं, हाउ डज द मार्केट वर्क. नंबर अलोकेटेड वाज हियर इन द मोमेंट. कितने पॉइंट का मूवमेंट आया एक कैंडल में? 900 पॉइंट्स. ऑलमोस्ट 645 हो जाएगा यहाँ तक. 900. रोज वही तो करते हो सर. न्यू मेंबर्स विल बी गेटिंग कंफ्यूज नो. व्हाट इज हैपनिंग हियर. ऐसे कैसे हो गया? एंट्री कब लेना चाहिए वो समझ सकते हो सर आप? डेफिनेटली यार, व्हाई नॉट. राइट. एक वीडियो है, एंट्री कैसे लेते हैं, लिक्विडिटी एक्सप्लेन करके वीडियो है. ओके, वो वीडियो जाके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेना. अभी के लिए शॉर्ट में समझा देता हूँ. राइट. So short explanation of trade execution was happened on basis of S2 B2, right? So wick generated, inside candle was generated, 1 2 3 break. This was the execution point, right? With this point of action हमारा यहाँ पे point of interest था 40 pips का SL, which is 400 points in BTC at the current stage, right? Let's look into the math. कितना point का SL यहाँ पे movement आई है? 279, जो कि हमारा SL यहाँ पे 400 points. Okay. So with that plan of action, the execution was taken under the place. TP1 will be the mathematical concept number, which is 86275, right? And gold में short का trade का execution का plan क्यों था? जो सीख रहे हैं वो खुद यहाँ पे मैसेज किया है. अगर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देख लोगे, मनन के लिए रिप्लाई दिया था. मनन सर इज सेइंग S2B1 जनरेशन 3041 के पास हुई है, राइट? डायरेक्शन बेरिश है. So what is S2B1? S2B1 is a generation of wick, first candle, second candle, third candle execution. Okay. If the confirmation is not given by the market in the third candle, fourth candle will be your execution point. So in this scenario, wick creation hua tha, continuity closure, right? The movement wasn't too fast over here. Next candle execution, confirmation यहाँ पे मिल गई थी, selling pressure. With the selling pressure, we had got a volume confirmation. With the volume confirmation, sat towards the down. Trade is running currently with 8 points, which is equivalent to 80 pips, which is equivalent to 8x. Okay. No fancy stuff works over here. Only simple maths, simple supply and demand, simple allocation points. Nothing more than that, guys. Okay. Hope you got the point, Pankaj. वीडियो का नाम आके liquidity explained है. You can go and check into the circumstances of that to understand how to execute the trades.
सो बेसिकली रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन होता है. ऑल द न्यू मेंबर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. If you're learning from the stream, if you're enjoying, and if the content is helping you out to grow in the markets, do hit a like, share, and subscribe. कोई explain कर सकता है यहाँ पे क्या हुआ? Right? If anyone can explain, that will be great. What did the market do over here? मीटिंग है. मीटिंग छोड़ो यार. बिना मीटिंग का ट्रेड करना सीखो. ये बिना मीटिंग का मैं पूछ रहा हूँ क्या है. मीटिंग आने से पहले ही तुम्हें कंफर्मेशन मिल गया था ना यहाँ पे. सॉरी. S2B1 है करेक्ट. उसके साथ रेड कैंडल में ही आपको कंफर्मेशन मिल गया था वॉल्यूम के साथ किस तरफ का डायरेक्शन आएगा. करेक्ट. राइट. उस परसेप्शंस के साथ एग्जीक्यूशन कन्वर्जन सेकंड थर्ड कैंडल रिजेक्शन के साथ ही. दूसरे स्ट्रीम पे यहाँ पे होगा. ओ माय गॉड व्हाट ए मूव. ओपी इन द चैट गाइस. Hit the like button guys. All the new members, welcome to the stream. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. Stream will be there for next 15 minutes. If you're liking it, if you're loving it, do hit a like, share, and subscribe. Once in a blue moon OP. Sell candle wick के साथ, then buy candle and third candle rejection. Am I right? Yes, that's right. आपने मार्केट मैनिपुलेट किया. नहीं भाई. We don't take money of retailers. वो हमारे डायरेक्शन में आते हैं, वो लेके जाते हैं. बट इस ट्रेड में मैं हूं नहीं. बता दे रहा हूँ. मेरा ट्रेड जैन से शॉर्ट में चल रहा है ऑयल में. सॉरी. एक छोटे छोटे कैंडल में सब कौन डरेगा. हियर वाज माय एग्जीक्यूशन.
बता दो कोई जैन से मार्च एंड होते हुए आया है, कौन होल्ड किया होगा? इसका टारगेट आके अभी भी यहाँ तक है, 6380 तक। वैसे ही हंसते हंसते खेलते खेलते बीटीसी का टारगेट TP1 hit, almost there for the TP2, 1000 points in the moment guys, keep it up. Thousand two hundred points running. Pankaj, hope you understood how the trades gets executed over here. Same cheese. Why was the execution shown? वॉल्यूम नोटिस करो, वॉल्यूम क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था यहाँ से हम उड़ने वाले हैं। ओके, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड रिले टेस्ट करो, बार रिले टेस्ट करो, उसके बाद लाइव टेस्ट करो, उसके बाद छोटा वैल्यू से एग्जीक्यूशन करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद जो आपका रियल ट्रेडिंग कैपिटल है उसके साथ मार्केट में उतरो। जैसे ही आओगे रूल्स फॉलो करके बने रहना इन द डायरेक्शंस ऑफ द मार्केट। मैथमेटिकल एज तक। हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। यस, हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। 5 मिनट्स 1 मिनट में एग्जीक्यूट करोगे तो ट्रैप हो गए। वर्क इन 15 मिनट्स, आर मेजर एग्जीक्यूशंस आर डन इन 15 मिनट्स, फॉलो दैट रूल। 15 minutes execution, wave will be looked in daily time frame, tide will be looked in 4 hours and 1 hour, and ride is executed in the following of 30 minutes and 15 minutes. Hello sir, good evening. Good evening Patel, how are you? यार वर्षा, इसका एक ख्वाब है, पूरा कर दो, एक टाइम लगा दो एंड उसका जो इंडियन सेशन का जो वीडियो था उसे लॉन्च कर दो। पार्ट 1 रिलीज कर देना, संडे को आ जाएगा पटेल, सॉरी आज आना था, फोरेक्स रिलीज कर दिए बाय मिस्टेकली। ठीक है, how is your back testing going on, how is your forward testing going on, how is your analysis going on in the markets? Sir, which broker is good for Bitcoin? Is it Exness or Delta India? Delta India में brokerage है, both are good. Back testing good, great. Better you use Exness. Leverage भी अच्छा देते हैं. Not promoting, saying. Nifty hitting continuous targets. Beautiful, great, loving it.
हाउ एक्सनेस अर्न्स? एक्सनेस खुद ट्रेड करता है यार. एक्सनेस अर्न्स थ्रू जीरो अकाउंट, राइट? जहाँ पे जीरो स्प्रेड है वहां पे अर्न करेगा वो. सर यूएम स्टार्ट करता हूँ एक्सनेस. श्योर, डेफिनेटली. यूएम का मतलब क्या है? एंड ऑफ द मंथ. गुड इवनिंग वंश. क्या टाइमिंग पे आए हो? जस्ट अभी बोलने वाला था कि टेक केयर, डोंट लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ लॉन्ग एग्जीक्यूशन, रॉन्ग एग्जीक्यूशन. गुड इवनिंग बोल दिया. जल्दी पूछो, क्या डाउट है आपका? सर फॉर दी एक्सनेस के पास सारा डेटा होता है. किसने कहा लिया है? वो तो हर एक ब्रोकरेज के पास होता है. कल से इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन माय एरिया, टू नॉट एबल टू अटेंड इन लाइव. नो वरीज. सर जस्ट सॉ द प्रीमियम्स व्हाट यू एक्सप्लेन्ड इन निफ्टी. माइंड बॉन्कर्स सर. सच में आपने 1 रुपये पे खरीद के 100 रुपए में बेचा? यस. दैट इज वन ऑफ द ट्रेड्स ना. हमने तो 6 एग्जीक्यूशन किए. माइंड ब्लोइंग सर. तो फिर ये ट्रेड करने में उसको बेनिफिट होता होगा ना? हाँ. एक्सचेंजेस पैसे देते हैं ना. डीजॉन पैसे देता है, नैस्डैक पैसे देती है, राइट? सर कल ही पूछूंगा फिर. ब्यूटीफुल गाइस, 1400 पॉइंट्स रनिंग. कीप अप द गुड वर्क. चलते चलते, हंसते हंसते, टारगेट TP2 हिट, which is 86553. अभी ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली हमारा जो 4 आवर्स का टारगेट है वो हिट होगा. 87874. वीर, इफ यू आर देयर इन द स्ट्रीम, होप यू आर एंजॉयिंग द एनालिसिस. सर ये 1 रुपया वाला ट्रेड के बारे में मत बताया करो. लोगों की धंधे बंद हो जाएंगे. वो 10% नहीं निकाल पा रहे हैं. मैं कहा बताया? मैंने एक्सपायरी होने के बाद बताया ना.
10 दिन से क्या बोल रहा हूँ पटेल? मार्च 12 से ट्रेड रनिंग है, मार्च 12 से ट्रेड रनिंग है, मार्च 12 से ट्रेड रनिंग है। राइट, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ऐड हुआ है करके बोलते हुए ही तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये क्या सुना मैंने सर? आपने निफ्टी का एक को 100 बेचा। हाँ, एक को 100 बेचा, चार को 250 में बेचा, 5 7 8 को 300, वो दो नंबर नहीं आते, 387 पे बेचा। बिल्कुल, मैंने रूल्स फॉलो किया है। एक्सपायरी होने के बाद बता सकते हैं। सभी के गाइडलाइंस में नहीं लिखा है कि एक्सपायरी नहीं होने के बाद नहीं बता। एक्सपायरी हुआ, मैंने बताया। बैंक निफ्टी का अभी मंथ एंड में आएगा ना एक्सपायरी, वो और मजेदार होगा। सर, निफ्टी में स्विंग कौन करता है यार? आप कुछ भी करते हो। वही तो, वो रिटेलर्स पर्सपेक्टिव है ना, उसके लिए मैं स्विंग बोलता हूँ। एंड पहली बार आज के दिन आई केप्ट माई एथिक्स असाइड एंड आई गेव द ट्रेड फॉर देम ऑल्सो, 100 पॉइंट्स का। वही बोलते हैं ना, जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक मानेंगे नहीं कोई। राइट। टीटा डीके हुआ है, टीटा डीके। रुको, एक सेकेंड दिखाता हूँ। कुछ टीटा डीके नहीं हुआ है। हाँ, डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप ऊपर नीचे होता रहता है। यस। नहीं जनाब, क्या बात कर रहे हो? आप गलत इसको देख रहे हो। सो वन ऑफ द एग्जीक्यूशंस बताता हूँ मैं। ठीक है। ये मैं एट द मनी की आज की जो ट्रेड दिया था, वो एग्जीक्यूशन पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, दिस इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ टुडेस, जो पहली बार मैंने बोला कि लॉन्ग की तरफ देख लो ये ट्रेड। एग्जीक्यूशन पॉइंट वाज हियर हियर हियर, 1 2 3 4। ओके।
वो दो ब्लैक लेन्स क्या है? वो एक MTSL है, वो एक एग्जिट पॉइंट है ऑप्शंस का। Okay, guys. So make sure that you guys don't trade opposite to the markets. Follow the rules, trade fearlessly, execute the trades in the direction. Make sure you follow the risk management and trade emotional less. And at that point of action, what are the two things that you have to keep in mind? जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Have a poker face carried while you're in the trade till the directions of the math. No FOMO trading, no running candle executions, only trade with proper liquidity executions following through the mathematical concepts. Protect your capital, don't give the money to the markets. अगर देना है तो छोटा, पकड़ना है तो बड़ा. समुंदर में शार्क अच्छा दिखता है, छोटी मछलियां नहीं. So make sure you execute the trades in the directions of the market. स्ट्रीम अच्छी लगे तो डू हिट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं कल की वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. नितेश साइनिंग ऑफ. रीजन फॉर एग्जिटिंग इज हमारा दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए थे एंड टारगेट हिट होके रिजेक्शन भी ले रहे हैं. विद दिस पॉइंट ऑफ एक्शन वी आर साइनिंग ऑफ फॉर द डे, राइट? Sir, when to use the reversal formula and golden ratio formula, please tell sir. Definitely तो सिर्फ कल के मॉर्निंग सेशन में बात कर लेंगे. बट अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय. नितेश साइनिंग ऑफ.